Hello and welcome to the YouTube channel of Vidhi Culture. Today we will talk about a very important topic, that is the important schedules of the Constitution. संविधान के जो हमारे important schedules हैं जो कि आपके examinations में आते हैं, आपसे generally बहुत बार directly पूछ लिया जाता है. They ask you directly that in which schedule this thing is mentioned or that thing is mentioned. So we must know what are the important schedules of the Constitution. बट बिफोर दैट वी मस्ट नो कि शेड्यूल्स आखिर होते क्या हैं, इनको आखिर क्यों संविधान में यहाँ पे रखा गया है या फिर इसको संविधान में जगह दी गई है. तो वी कैन से दैट शेड्यूल्स आर नथिंग बट दीज आर द टेबल्स which contains additional details not mentioned in the articles. सो कुछ चीजें जो कि आर्टिकल्स में मेंशन नहीं है, उन टेबल्स को यहाँ पे एडिशनल जो डिटेल्स थी उनको जो है यहाँ पे शेड्यूल्स में हमने ऐड किया. तो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट शेड्यूल्स. देन वी नीड टू नो दैट कि भाई प्रेजेंटली कितने शेड्यूल्स हैं टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो अगर हम प्रेजेंटली देखेंगे तो देयर आर 12 शेड्यूल्स. ओके, टोटल 12 शेड्यूल्स आर देयर. बट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, originally how many schedules were there? So there were 8 schedules in the original constitution. फिर सवाल ये आता है कि भाई फिर कौन कौन से कब कब ऐड हुए. तो इफ यू लुक एट द एडिशंस कि भाई कब कब कौन कौन से ऐड हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सबसे पहले की बात करें तो इट वाज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, happened in 1951, which added the ninth schedule. Then we have the 52nd Amendment Act 1985. इसके अंदर हमने जो है पार्ट 10 ऐड किया, जो कि बात करता था किसकी, आपकी डिफेक्शन की. ओके, दिस एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड चीजें इसके अंदर. देन द थर्ड वन is 73rd Amendment Act 1992. 1992 इसके अंदर आपका जो है यहाँ पे ऐड हुआ पार्ट शेड्यूल 11. शेड्यूल किन चीजों से रिलेटेड बातें जो है ऐड की गई विद रिस्पेक्ट टू द पंचायत्स. एंड देन द फोर्थ वन, दैट इज 74th Amendment Act 1992. It added the 12th schedule in the constitution, and it talked about the the municipalities. So this is how the schedules were later on added in the constitution. So now we will see that out of these 12 schedules, what are the important schedules. अब अगर हम बात करें कि भाई सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके अंदर से कौन कौन से वो शेड्यूल हैं जो कि हमें हमेशा ही याद रखने हैं और उसको हम नहीं भूल सकते हैं. वी डोंट हैव अ चॉइस टू forget those schedules when we are appearing into any entrance examination. तो हमें वो हमेशा ही याद रखने हैं. तो जैसे कि हम बात करेंगे कौन कौन से शेड्यूल. फर्स्ट शेड्यूल जो कि हमें याद रखना है. देन सेकंड शेड्यूल. देन फोर्थ शेड्यूल. देन यू हैव द seventh schedule. Then you have the 8th schedule, and you have the 10th schedule.
these are certain schedules which are very 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 important, आपके लिए बहुत ही important है। और अगर इसके अंदर से भी मैं आपको बताऊं कि इसमें से भी सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है, तो इसके अंदर से भी अगर हम शॉर्टलिस्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो शेड्यूल है वो आपका है, आपका शेड्यूल 4 एंड शेड्यूल 7, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब शेड्यूल 4 के अंदर क्या गिवन है हमारा, 4 शेड्यूल के अंदर मेनली जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स, सीट एलोकेशंस की बात कही गई है। किससे रिलेटेड, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा सीट एलोकेशन। वहीं अगर हम सेवन्थ की बात करें तो सेवन्थ के अंदर जो है 3 लिस्ट जो है दी गई है, जिसमें यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट दी गई है। एंड द 10th वन इज द एंटी डिफेक्शन। And the eighth one, which is very important, that is the languages given under here. So these are, certain very, very important schedules जिसको कि हमें याद रखना है। और इसके अंदर से ही मैंने आपको बता दिया दो जिसके आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, दैट इज 4 एंड 7, सबसे ज्यादा हाई चांसेस होते हैं इनके पूछे जाने के। आफ्टर दैट दिस 8th, देन 10th। ओके, दीज आर वेरी 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 मोस्ट important. Now we'll see what these schedules talk about. तो फर्स्ट अगर शेड्यूल की बात करें तो ये बात करता है द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज की। तो हमें ये याद रखना है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में उनके नाम, उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, दैट इज गिवन अंडर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन द सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या चीजें दी गई हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ये आपके जो है A B C D E पार्ट में डिवाइडेड है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए की अगर बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द प्रोविजंस एज टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। और जो बी आपका पार्ट है ये ओमिट हो चुका है, इट इज नो मोर। Then coming to the third one, that is the C, it talks about the provisions as to the Speaker and Deputy Speaker of the House of the People and the Chairman and Deputy Chairman of the Council of States and the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly and Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council of the State, that is Rajya Sabha. Then Part D, provisions as to the judges of the Supreme Court and the High Court. Then E, the provisions as to the Comptroller and Auditor General of India. Okay, so it basically talks about these parts in which President, Governor, Speaker, Deputy Speaker, Chairman, Deputy Chairman, then the judges of the Supreme Court and the High Court, and the Comptroller and Auditor General of India, that is CAG, is given under this part. So this is Schedule 2. Schedule 2 के अंदर ये सब चीजें दी गई हैं। वहीं अगर हम बात करें शेड्यूल 3 की, तो इट हैज ऑल द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस व्हिच आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो थर्ड शेड्यूल इसकी बात करता है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। So this is allocation of seats in the Council of States, that is Council of State क्या है, राज्यसभा। So this is very very important, you must remember this. Then the fifth schedule. Fifth schedule is also important. Provisions as to the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes. So it is also further divided into parts. That is Part A, the general. Then B, administration and control of scheduled areas and scheduled tribes. Then scheduled areas, and then amendment of the schedule. Amendment of the schedule. Then coming to the sixth one. Sixth one is the provision as to the administration of tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. Okay, it is only with respect to the Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. Only 4 states. Then coming to the seventh one, which is the most important. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शेड्यूल है जो कि आपसे पूछा जाता है। सो here it is given the list 1, list 2 and list 3. List 1 talks about the union list कि भाई इसमें बेसिकली दिए हुए हैं subjects on which the union can make laws. Then you know there are subjects mentioned here under which the state can make laws, and concurrent list in which both center and state can make law. Both center and state can make law, but if both
both of them make law on the same subject, then definitely center will prevail over the state. So this is very important. Seventh schedule, you must remember this. Then coming to the eighth one, eighth one is also very, very, very important because languages are mentioned here. Languages are mentioned here in the eighth schedule. It is also important. Then coming to the ninth schedule, the validation of certain acts and regulations are given here in this schedule. Then the 10th schedule, it is also again very, very important, and it is important with respect to your, you know, examination, the upcoming examination, because you know the situations which happened in different states, so they can ask about the ground of डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो देर इज अ चांसेस कि पूछ सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कहाँ पे कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है, तो इट इज schedule 10. So it is also very, very important with respect to your exam. Then coming to the 11th one, 11th में आपका mentioned है powers, authority and responsibilities of the panchayat. Panchayat से related. It is also important. It can be asked, but yes, it is not that important. But yes, in exams like UPSC, SSC, this is also been asked many times. Then coming to the 12th schedule, it talks about the powers, authority and responsibilities of the municipalities, etc. ठीक है? So these were the certain, you know, schedules which were important with respect to your examination. Again, I will tell you what are the schedules. So the first, then second, then fourth, then you have seventh, then you have eighth, and then you have 10th, which are the most important ones. You cannot, you know, afford to forget these schedules because these can be asked in any of the examinations. ये सबसे ज़्यादा important schedules है जो कि directly पूछ लिए जाते हैं exams में. So I hope you all have understood this thing, that what are the important schedules you need to remember when when you are appearing in any examination in which, you know, constitution is coming. So thank you so much. Thank you for joining. We'll come up with more such videos and updates later on. Thank you. Bye bye. Take care.